Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about our topic packaging. Before this lecture, I had explained you about that marketing and marketing management. In marketing, we are introducing a lot of goods and services in the market, and after that we are launching these all things in the packed cover to transport it from one place to another place with the help of this packaging in the proper way. Another thing, with the help of packaging, labeling, our quality of the goods and services should be important part, and this is the important part of these all things. With the help of that, we are explaining about today's topic is in front of you, packaging. So dear students, with the help of this information, we have to discuss about small meaning and definition of packaging. Packaging is the basic activity of every company. In market, you know very well, a lot of companies are running, and these all companies are working at the base of same activity, and that activity is called packaging. This packaging is a very important and necessary part of our daily life and company's activity also. With the help of that, we can say this activity is a compulsory in our daily life. Once again listen, packaging is the basic activity of every company. Every company is making a lot of goods and services in the market. With the help of that, we are going to discuss these all things with the help of only packaging. Packaging is a compulsory information for each and every company. Suppose we can say the companies always supply the goods and services with the help of packed material. Suppose for example, you are taking a lot of goods and services from the market. For example, Coke, soft drink, chocolate, paste, toothpaste. These all things are the packed material. When you are purchasing these types of goods and services from the market, you are getting 100% fully packed. This packed is a very important part of our business activity. Same thing we are going to discuss here. Packaging is the basic activity of every company. When we are going to pack any goods and services with the help of packaging, the quality of goods and services will be maintained for a long period of time. We can able to put it for 1 year, 2 years, 3 years also in the particular package with the help of packaging. Now in front of you, I have written label of packaging. 3 labels of packaging are given in front of you. With the help of that, we can able to know this is the important part of our packaging process. So, first one is a given primary package, second one is a given secondary, and third one is a given transportation packaging. So one by one we have to discuss these 3 all topics, why these 3 labels are given in front of you, and these 3 labels are very important part of your daily life. With the help of that, we can able to solve these types of important questions, and in case study these all topics are coming, and this is a very important part. When you have to solve case study, this is the necessary, and these all levels are important part of your case study. So now come on the first topic, primary packaging. So now listen, what is the meaning of primary packaging? It refers to the immediate packing of the product. That one is called primary package. Once again listen, primary package refers the immediate packaging of product. It remains that product till it will use. For example, you are using toothpaste, Coke, otherwise paste,
a lot of things we are going to utilize these all things is the example of primary package. When you have to purchase toothpaste, the toothpaste will the example of the primary package, because it should be the compulsory, because toothpaste we can't able to put it out without any packet. Without any packet, if you have to put outside, it will be remain not in the same position. The position will change, the material will be destroyed after some time. That's why primary package is an important part of packaging process. Second one is given in front of you. Secondary package. Secondary package is the additional package with the given most precaution generally consumer throw when they have to start using the product. This is the example of secondary packaging. Once again come on the same example of toothpaste. Suppose I have a toothpaste of any company. First, when we are going to purchase the toothpaste, we are getting first packet, that one is the tube. Tube is the example of primary package. After that, tube is inside in the small paper pocket. That one is called secondary package. Secondary packaging we can say. The toothpaste on the 3 stages. First stage, second stage and third stage. We can say when we are purchasing toothpaste, primary packaging we can say it should be in the tube. In that time it should be a liquid. This is the first position. In first position is the primary package. यहाँ आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल टूथपेस्ट का लिया गया है। टूथपेस्ट को हम तीनों डेफिनेशन में बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहला आपका आता है टूथपेस्ट एक लिक्विड होता है, जो भी अगर पेस्ट को अगर हम ट्यूब में ना रखें तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए पहले उसे हम क्या करते हैं एक पेस्ट में, मतलब एक साधारण से स्मॉल पैकेट में रखा जाता है। एज वेल एज इट शुड बी द प्लास्टिक, ओके, एंड लिक्विड विल बी इनसाइड, और लिक्विड को उसके अंदर रखते हैं और फुल्ली पैक्ड रखते हैं, जिससे वो सामान कभी खराब ना हो। वो फर्स्ट पोजीशन का हिस्सा होता है। लेकिन आपने देखा होगा आपके टूथपेस्ट पे फिर सेकंड कवर होता है, जिसपे वंस अगेन वो सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल लिखे होते हैं, जिसे सेकेंडरी पैकेजिंग कहा जाता है। दिस शुड बी है सेकेंड पोजीशन, ओके। सेकेंडरी पैकेजिंग इज कमिंग ऑन दैट टाइम। उस टूथपेस्ट को हम फिर दूसरे पैकेट में रखे होते हैं। उस पैकेट पे कंपनी का नाम, लेवल और सारी चीजें लिखी होती हैं, जो एक पेपर का या गत्ते का या पॉलिथीन का बना होता है। आप ऐसे एग्जाम्पल बाजार में देखे होंगे। आफ्टर दैट थर्ड वन, ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द third position. With the help of that, third position is a very important part. After first, we are getting second. After that, third one, transportation. Because the goods and services we have to transport from one place to another place with the help of transport services. With the help of cardboard. Cardboard means we can say एक कागज का गत्ता आपने देखा होगा, उसमें आप इसे थर्ड पोजीशन में सारे पैकेट को एक साथ रखते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में एक पैक में एक ही टूथपेस्ट होता है। बट इन कार्डबोर्ड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन, साइज ऑफ द कार्डबोर्ड वी हैव टू पुट मिनिमम 100, 20, 50, 10, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू साइज। हम ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार या ऑर्डर के अनुसार डिलीवरी को बाजार में देते हैं।
और ये डिलीवरी हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अनुसार ही सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उस गत्ते में हम कम से कम 10 पीस, 20, 50, 100 जैसे हमारी डिलीवरी हो, जैसे हमारे कार्डबोर्ड का साइज हो, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन एबल टू पैकेजिंग दिस ऑल थिंग्स इनसाइड इन द कार्डबोर्ड। दिस इज द explanation of third one. That's why these all three important part of our level of packaging. Once again listen, transportation. There is a packaging used for transporting goods and services from one place to another place. That's why we are utilizing this third level of packaging. This is the very important part. Once again listen, I have told you 3 level of packaging. The 3 levels of packaging is a very important part. With the help of that, we have to discuss these all things. आपको 3 लेवल बताया गया पैकेजिंग के। ये तीनों लेवल हमारे डेली लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी सहायता से हम पैकेजिंग को करते हैं। पहला, सामान हमारा खराब ना हो, इसलिए फर्स्ट प्राइमरी को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सामान को क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो अच्छी रूपरेखा दिखानी है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग को मानते हैं। तीसरा, अगर हम किसी गत्ते में, प्लास्टिक में या किसी मजबूत बॉक्स में रखते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारी अच्छी होगी, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और खराब नहीं होगा। बट अनदर थिंग वी कैन से, what is the importance of packaging? Importance of packaging. So we have to discuss importance of packaging. Packaging is a very important part of our business activity. With the help of that, we can pack each and every goods and services, and this will be the important part. Now we have to know why we are going to make packaging and what is the importance of that. First one is that protection. Protection is a very important part of our packaging process. किसी भी सामान को पैक करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन, अगर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे किससे, कीड़ों से, इन्वायरमेंट से, या उसे नुकसान होने से अगर बचाया जाता है तो प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, किसी भी सामान को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम लेबल लगाएंगे, पैक करेंगे और उसे सुरक्षित सामान को रखेंगे। दिस शुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट, प्रमोशन। Suppose any goods and services we want to promote in the market, with the help of packaging we have to promote in the market. बाजार में कोई भी सामान पैकेट के अनुसार ही प्रमोट किया जाता है। अगर हमारे पैकेट अच्छे हो, पैकेजिंग अच्छी हो, देखने में अच्छा हो, तो उसके डिमांड और सप्लाई बढ़ जाती है। दिस इज द पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रमोशन। दैट्स व्हाई these all things we are getting this environmental development. Next one is a given conveyance. Here is the less space, that's why heading I am explaining one by one. Conveyance, this is the process of these all things. With the help of packaging we can able to convince each and every one. अगर हमारा पैकेट अच्छा दिखता है, सुंदर है, तो हम किसी भी ग्राहक को अपने सामान के प्रति कन्विंस कर सकते हैं। That's why packaging is a very important part for these all things. Next one is a given product differentiation. किसी भी सामान को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? ओनली पैकेजिंग के माध्यम से। अब पैकेट के अंदर क्या है, वो पैकेट के ऊपर लिखा होता है और उसके हमें लेबल लगाया होता है, या
उस पैकेजिंग के ऊपर सब कुछ डिटेल दी गई होती है। इसके अंदर टूथपेस्ट है, वॉट एवर इनसाइड इन द पैकेट इट शुड बी रिटन ऑन दैट पेज। This is the part of development of these all goods and services in the market. That's why we are reading about these all topics, and this is a very important part and important information in front of you. Next one is given self-service outlet. अगर किसी भी सामान की पैकेजिंग अच्छी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सर्विस बाजार में बढ़ जाती है। बिना प्रचार प्रसार के ही उसकी डिमांड और सप्लाई बाजार में बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव पैकेजिंग। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू आई हैड एक्सप्लेन अबाउट द पैकेजिंग एंड लेवल ऑफ पैकेजिंग एंड हियर इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। The importance of packaging is a very important part of these all things. With the help of that, you can able to solve your case study and you can able to solve this all theoretical part. Dear students, with the help of this topic, you have to complete your notes and save this video and subscribe my channel and share it to other friends also. And thank you for you all for giving your precious time to listening my lecture. Thank you. Thank you all.